Morning class 12. In business study class, today's our topic is Maslow need hierarchy theory of motivation. Maslow need hierarchy theory of motivation is an important topic, and the basic of this theory is that needs is the most important technique for motivation. If one need is satisfied, then the human being another needs are to be arise, then the human being wants to satisfy the next need, then ultimately they are motivated to do the work, right? So this is the Maslow hierarchy theory, and this theory is to be developed by Abraham Maslow in Abraham Maslow first theory of motivation in 1943. और मैस्लो हियरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बीइंग की 5 तरह की नीड्स होती हैं, और जैसे ही वो नीड सेटिस्फाइड होती जाती हैं तो ह्यूमन बीइंग नेक्स्ट नीड की तरफ शिफ्ट हो जाता है और अल्टीमेटली अपने आप ही मोटिवेट होता चला जाता है. सो दीज आर 5 टाइप ऑफ नीड्स विच आर शोन दैट नंबर 1 इज साइकोलॉजिकल नीड, नंबर 2 सेफ्टी नीड, नंबर 3 सोशल नीड, नंबर 4 एस्टीम नीड, एंड नंबर 5 सेल्फ actualization needs. So first of all, the psychological needs. Psychological needs यानी कि मैस्लो हियरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक नीड सेटिस्फाइड होगी अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग मोटिवेट होकर नेक्स्ट नीड की तरफ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइकोलॉजिकल नीड्स. Psychological needs means the basic needs by which a human being can alive. Suppose it the need of food, shelter, clothing, sleep. दिस इज द नीड ऑफ साइकोलॉजिकल नीड. तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग अपनी साइकोलॉजिकल नीड कंप्लीट करते हैं. इट मीन्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, इट इंक्लूड्स इन इट. सो दिस इज द नीड्स बाय विच वी कैन सेटिस्फाइड. देन दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड, देन ह्यूमन बीइंग कैन a man alive. So these needs will be known as the psychological needs. After that, the next need, that is safety needs. जैसे ही साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती है तब एक ह्यूमन बीइंग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लगता है. तो सेकंड नीड अराइज हो जाती है सेफ्टी नीड्स, और सेफ्टी नीड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटे, फिजिकल सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेफ्टी. फिजिकल सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेफ्टी. फिजिकल सेफ्टी में फिजिकल सेफ्टी रेफर्स टू द डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट, अटैक्स, डिजीज एंड अदर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स. Right? These will be known as the physical safety needs. And then economic safety. Economic safety means safety of livelihood and arrangement of old age, that is an economic safety. तो psychological needs के बाद हम next need safety need की तरफ बढ़ेंगे. Safety need 2 types होती है, physical needs and economic needs. Then after safety needs, the next need is social need. Social need means it needs affection, sense of belongingness, acceptance, friendship. These are the social needs. And when the social needs are to be fulfilled, then a human being then move to the next need, and that is esteem needs. Esteem needs क्या होती है बेटे? Esteem needs में हम इंक्लूड करते हैं respect, status, recognition, attention. These needs will be known as the esteem needs. एस्टीम नीड्स के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो नीड हमारी टेक्निक ऑफ मोटिवेशन है, दैट इज ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स डिजायर टू मैक्सिमाइज वट एवर पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस. इट मीन्स अपने आप को एक्चुअलाइजेशन नीड्स मीन्स अपने आप को रियलाइज करना कि कितनी एफिशिएंटली हम काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिशियन वांट टू बी perfect in music. Similarly, a poet wants to be specialist in this field. So this need will be known as the self-actualization needs, in which we are want to become the expert, want to become the efficient in our field. So according to Maslow hierarchy, these are the 5 type of needs. Yes, students, Maslow need hierarchy theory को आगे कंटिन्यू करेंगे. पिछली वीडियो में हमने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की 5 नीड्स पढ़ी थी. टुडे इज नाउ द अजम्पशन ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. अजम्पशन इज पीपल बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स. देयर आर मेनी नीड्स ऑफ पीपल. इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी कैन बी मेड.
motivation and the satisfactory needs, and after that the next higher needs serve as motivator. People move to next higher need only when the lower need are satisfied. ये assumptions हैं बेटे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की. सबसे पहली assumptions है कि people behavior affected by their needs. People का behavior उनकी needs से affect होता है. जैसे ही एक नीड कंप्लीट होती है तो दूसरी हायर नीड मोटिवेटर का काम करती है. This plays a motivator, and when the needs are to be satisfied, then the person move to a next higher needs, and people move to the next higher needs is a technique of motivation. So this is the assumptions of Maslow need hierarchy theory. And in the next, there are two type of needs. Maslow divided two types of needs: individual needs and organizational needs. In individual needs, self-fulfillment, status, friendship, stability of income, and hunger is the individual needs. And in the organizational needs, we include achievement of goals, job title, relation with colleagues, pension plan, and the basic plan. So these are the individual needs and organizational needs. When a needs is satisfied, then a person move to the next higher needs, and this is a technique of motivation. But here is some of the conclusion of Maslow hierarchy theory is needs is a very important technique of motivation, and individual and organizational, according to individual and organizational needs, when a need is higher, then a person move to the next. When a needs is satisfied, then a person move to the next higher needs. It's a very important technique of motivation. But here is the some of the criticism of Maslow need hierarchy theory. Number one criticism is Maslow hierarchy of needs is not permanent. This change according to the situation. Number two, it is not necessary that needs of only one category be strong at a time and the remaining is unimportant. Right? तो ये क्रिटिसिज्म है कि एक टाइम में एक ही नीड को हम फुलफिल करते हैं, दूसरी नीड जो है वो अनइम्पोर्टेंट हो जाती है. और मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी नीड परमानेंट नहीं होती. किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह की नीड्स अराइज हो सकती है. So students, this was the Maslow need hierarchy theory, and you have to learn the chapter motivation up to Maslow need hierarchy theory. Thank you.